Okay, many warm wishes for the new year. Everyone, ସମସ୍ତେ ଭଲ କର ଏ ବର୍ଷ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ rank ପାଅ, and only thing that decides the outcome is your determination. Okay, rest jaha bhi ଅଛି that is beyond our control. Okay, what we can control is our determination and our consistency. Happy New Year, Tamanna. Yes, definitely you should present. Okay, if you want to appear the test later, Rasmindan, good evening. If you want to appear the test later, it is fine. You may or may not present, that is your decision. If you want to appear the test later, you can leave the discussion and watch the recorded one. Okay, so we'll be moving. Question jaha bhi thila bahut bhallo question thila, and these are the questions that are expected in the exam. Kahinki na jaha bhi current happenings achi polity re सेथ्रु क्वेश्चन ऑलमोस्ट आसुची ठीक अछि तो से सेउडा को हमको वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट आ नेक्स्ट जिंस होची कि एंड ए जो जिंस अछि यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली बुझिया पड़ो कि क्वेश्चन एक्चुअली पचरा कोन हेची ता परे ही ट्विस्ट क्वेश्चन यस ओके सो एमती क्वेश्चन प्रैक्टिस करी गले तुमको जीएस रे क्वेश्चन लागिवो लॉलीपॉप ठीक अछि तो तेनो से लेवल ऑफ प्रैक्टिस दरकार आशुतोष ठीक है आई गॉट योर मेसेज ओके सो इट्स ओके वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 says that explain how the parliament exercises the control over the executive okay simple question केमिति parliament executive ऊपर कंट्रोल करूछ तो एठी इंट्रोडक्शन तुमको लिखियार अछि कि what do you mean by the parliamentary democracy means that the executive is responsible to the parliament or you can say legislature and you can say the lower house in particular okay and introduction you can write that and there are some mechanisms that fix the accountability of executive to the parliament okay then next तापर तुम लिखियार अछि what are the methods or what are the modalities or what are the ways to fix the accountability of the executive to the parliament okay so a question already that has been asked in UPSC रे पढ़थला ठीक अछि तो definitely this becomes important so first जिंस होची there are various methods of you can say parliamentary control like on the floor of the house first for example तुम कहि परियो question hours 0 hours okay there are some parliamentary methods then you can say about debates discussions motions okay call attention motions then no confidence motion so एकदम लिखि परिबो ऑलरेडी जान जो सेंसर मोशन एसो जिंस ठीक है दिस इज पॉइंट नंबर 1 देन पॉइंट नंबर 2 जोटा मु इंट्रोडक्शन ने कहली कि द मिनिस्टर्स आर रेस्पोंसिबल टू द parliament or you can say legislature and in particular to the lower house of the parliament to the Lok Sabha ठीक है this is the point number 2 then point number 3 you can write that direct question हाँ council of minister collectively responsible to the lower house okay ठीक है then point number 3 you can write that MP or you can say the member of the parliament ask questions regarding the your allocation of the funds implementation of the policies etc okay then next point you can write that budget okay budget control before allocation of the budget that happens on the floor of the house re budget allocation pore budget allocation time re debates discussion हुए budget over allocation जहाँ भी अच्छी token cut से motions अच्छी जहाँ भी अच्छी and before allocation of the budget the control happens over the floor of the house and after budget allocation hella pore budget allocation hella pore the control being exercised by the public accounts committee control exercise करे after allocation of the budget केमिति allocation जो हेतला जो funds सेटा effectively utilize हला कि नहीं so that is post budgetary control then
we have various committees. We have various committees, various standing committees of various departments. Okay, yes, standing committees. The bills that are put on the floor of the house, they are referred for more debates, discussions, analysis to the respective standing committees. Okay, so that is also one mechanism of control of parliament over the executive. Okay, so this facilitates the scrutiny. A जो standing committee of scrutinization था, this policies the legislation. Okay, and these are the controls. এই ଜିନିଷରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କି क्वेश्चन ପଚାରିଥିଲା କି हाउ एक्सरसाइज द कंट्रोल, तो ये आउ कि जिन तुम ऐड कर कि देयर आर सम इश्यूज राज्यसभा रटिफिकेशन इन बिल टू मेक इट एन एक्ट. ओके, हाँ, येस, यू कैन राइट दैट. नेक्स्ट तुम लिख कि व्हाट आर द इश्यूज. सपोज लास्ट माने आम देखीचे लास्ट फ्यू इयर्स देयर आर फ्यू बिल्स दैट वर पास्ड by the way of money bills. Okay, कहीं ना money bill रे there are less scope of debates and discussions. ठीक है, so various bills were passed as money bills. That is one area of concern. Okay, then next, parliamentary disruptions. Parliamentary disruptions are you can say that diminishing the control of parliament over the executive. अरे बिल ऊपर डिस्कशन हेले तो जाई कि कंट्रोल रहिबो. parliamentary disruption हेले आ डिस्कशन ही परिबनी बिल ऊपर. Okay, that is one area of concern. Third area of concern, that many of the bills are being passed decreasing working hour. Yes, that is how that's why I told parliamentary disruptions. Then you can write about that many bills are being passed by voice votes. Okay, only by voice votes. So these are three areas of concern which you can write, that yes, these are the factors which are diminishing the control of the executive, the control of the parliament over the executive. Okay, then these are the things. And also you can write that ordinance making power is one issue. Ordinance making power is one issue that that bypasses the legislature to make a law. Okay, that is one of the issue. So these are the factors. Control रही, what are the challenges, and then conclusion लिखि पारिबो कि the legislations in the जहाँ भी legislation होउची raw form these are put to the parliament. So it is necessary that those legislations are subjected to a rigorous scrutiny, debates and discussions, so that a greater public welfare would prevail. You can conclude like that. Okay, this will take care of the question. Then next question is, the noble purpose of anti-defection law is to bring stability to governments. However, it is sometimes said to be against the true spirit of democracy. Discuss. Okay, a very good question. Anti-defection law was in news because of the case of Maharashtra Assembly. The case is still going on in the Supreme Court. So ordinance, yes, ordinance is issued by executive only. Okay, legislature role पछरे आसे ordinance making रे. ठीक अछि. So जेहेतु महाराष्ट्र असेंबली डिबेट्स महाराष्ट्र असेंबली केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट चली, सो एंटी डिफेक्शन लॉ बिकम्स सिग्निफिकेंट. ओके, ऑलवेज एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलवेज माने गोटे हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. सो सेम वी कैन एक्सपेक्ट फॉर ओपीएससी आल्सो. ओके, सो दिस इज अ मस्ट रीड टॉपिक बिफोर द मेंस. सो इन इंट्रोडक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ रो प्रिलिम रे भी क्वेश्चन पड़े एथर. एंटी डिफेक्शन लॉ पूरा माने एक्सटेंसिवली डिटेल रे क्वेश्चन पड़े. ओके, केबे इंप्लीमेंट हितला, केबे टू इफेक्टिव हैला, बट सेते तो पढ़ी होबनी. बट जस्ट रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स टू राइट एनी इंट्रोडक्शन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इट इज इन द 10th schedule and it was inserted after the 52nd Constitutional Amendment Act 1985. Okay, and how it deals with the disqualification of the members by changing or disqualification of members after they switch over to another political party. Okay, so the introduction etik likhiya padibo. And 52nd Amendment Act 1985 is a must write thing in the exam. Okay, eta ko likhibo and you just underline the name. Okay, 52nd Amendment Act 1985, because examiners love these things. Article, Amendment Act, name of the committees is very important. जब तुम गोटे कमिटी ना लिखुच एंड यही तो आम जहाँ डिस्कस करवा इन द कोर्स ऑफ डिस्कशंस, राजमनार कमिटी हो, सेकेंड ARC हो,
भेंकट चालिया कमिटी हो पुंची कमिशन हो जहाँ भी हो जस्ट जहाँ भी कमिटी ना लिखुच डेफिनेटली यू शुड मेक ए बॉक्स और अंडरलाइन डेफिनेटली मार्क पड़ो तो दिस इज द इंट्रोडक्शन देन आमर क्वेश्चन आसी कि हाउ इट इज एगेन्स्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी तो आमको देखा पड़ो कि कौन इश्यू रही एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक अच्छे एंटी डिफेक्शन लॉ फर्स्ट जिनस हूँ इट रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ द एमपी और एमएलए केमी रेस्ट्रिक्ट कर बिकॉज द एंटी डिफेक्शन लॉ forces the MP and MLA to toe in the line of the party. First point, that it restricts the freedom of MP or MLA. Okay. Second, it undermines the true spirit of the legislature. केमती undermine करुच्ची ना by the anti-defection law, the MPs or MLAs they are just reduced mere numbers in case of any instances of voting or etc or you can say any instances of discussions debates or voting जहाँ भी हो they are reduced to mere numbers कहीं ना with the you can say anti-defection law the political parties force the legislatures to toe in the line of the party. Okay, so and then you can write about it undermines the accountability केमती undermine करुच्ची ना जदि आमे जदि डिबेट्स एंड डिस्कशन न हो तो definitely this will undermine the accountability of the executive. So it might happen, yes, it might happen that it may not come on the floor of the house that freely they can ask any questions to the government, even if जो माने भी ruling party भी अच्छे जो MPs and MLAs they might fear to ask questions. Okay, so because anti-defection law is there. Okay, so if there is a fraction of unsatisfied MLAs or MP who are not in support of the government, they might ask to freely ask questions, or they might feel that if you ask questions or if you do something like that, we might be forced to you can say the membership of the house, they might lose the membership of the house. Okay, so next is that in case of split, okay, what happens in case of split case रे कौन हुए यदि split case रे if the split is less than 2/3, okay, so 2/3 limit जोटा fix है इसी such limit टा it has been arbitrarily fixed. Okay, so we don't know कि यदि 2/3 माने नहेला ताहले माने डिसीजन जहाँ भी निया है इफ इट इज गुड और नॉट जदि आमे कहबा कि 2/3 रु कम हेले लॉ रिकॉग्नाइज करूनी ठीक अछि कि नहीं तो जो आर्बिट्रेरी लिमिट फिक्स है जे 2/3. ओके, सो 2/3 रु कम हेले इट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट एज ए स्प्लिट. ओके, सो दैट इज वन इश्यू कहीं ना 2/3 हेले ही डिसीजन 2/3 हेले ही आमे रिकॉग्नाइज करू दैट इज वन लिमिट व्हिच कैन नॉट बी जस्टिफाइड. ओके, यू कैन राइट दैट जे इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द स्प्लिट if it is less than 2/3. Okay, then next point you can write that so these are the issues with the anti-defection law. Okay, first hochi freedom केमती restrict करूची. Second point accountability aspect तमे mention करिवो. Third point लिखि परिवो कि there is a fear of asking questions or there is a fear of opposition, there is a fear of your opposition to any decision which is taken by the government. Okay, even if that does not you can say favored by the major section of the ruling MLAs. ठीक अछि, that is not favored by the major section of the ruling MLAs. Okay, so then next you can write a rule of anti-defection law for 6 months for nominated members. Yes, say aspect to mention kari paribo. Yes, so so these are the issues. There is no limit to adjudication. Example Mizoram legislature. हाँ, this is also one issue कि adjudication also there is no limit. Good, एटा गोटे भल पॉइंट. सो तापर आमे देखिबा कि कोन हेई परिबो, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस. कहीं ना आमे तो खाली प्रॉब्लम लिखितले हबो, सॉल्यूशंस लिखि परिबा. सॉल्यूशंस लिखि परिबा कि there is a need to have a good intra-party democracy. कहीं कि ना the any intra-party democracy, be it in the ruling party or be it in the opposition party, that affects the stability of the government. ठीक अछि कि नहीं. So intra-party democracy, be it the ruling party or be it the opposition party, there is a need of intra-party democracy. कहीं ना
if there will not be inter-party democracy, horse trading promote hobo सब बेले, ठीक अछि. So there is a need for inter-party democracy. Then regulation of the political parties is also important, ठीक अछि. काहे कि ना there should be more transparency with the functioning of the political parties. Okay, we can bring the political parties into the ambit of the Right to Information Act. Okay, then one thing that is there is the speaker is the next point is that the speaker is the final authority to adjudicate on the issue of the anti-defection. ठीक अछि. So जदि स्पीकर ही डिसाइड करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ रो, देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट between the legislature and your executive. Okay, so there is a conflict of interest. Okay, so speaker might be relieved from the task of adjudicating, or you can say the post of the final authority in case of any issues of anti defection. Okay, so kahin na jehetu conflict hochi, it violates the principle of separation of power. Okay, so then तमें लिखिपार कि यो पावरटा क्या दिखाई पार, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को दिखाई पार, बिकॉज दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विथ यू कैन से गुड ट्रैक रिकॉर्ड. ओके, एंड यू कैन that is also suggested by the second ARC also. Okay, then these are the things that you should write in the suggestions, and in conclusion you can write that anti-defection law is good because it has virtually ended the IRM Goyaram culture that was happening, that was there in the Indian politics in the 90s or 80s. Okay, in the 80s. So 70s 80s रे जो IRM Goyaram culture thila, there is frequent fall of governments. Okay, so it has contributed to the stability of the government, but also it has become somehow it infringes on the freedom of the elected legislature, MP or MLA. So in that case there is some need of some you can say amendments, okay, to anti-defection law, so that it can be better utilized for the parliamentary democracy. Okay, keeping in mind the stability of the governments. Okay, lose kardele bhi that will contribute to again horse trading and those things. Okay, so you can write a balanced conclusion. Okay, so and also you can write you can correlate these things with the criminalization of politics, money and muscle power. Okay, it has somehow restricted the influence of criminalization of politics, money power, muscle power in the functioning of the democracy. So it is definitely a revolutionary step, but there are some need for some corrections so that the freedom of the elected legislatures could be protected. Okay, IRM Goyaram culture हाँ लिखियो सेमती किछि नहीं हला. This is a माने उटे official term use office, although officially use हुए नहीं. IRM Goyaram तुम लिखि परियो कि ओके, हॉर्स ट्रेडिंग और IRM Goyaram जदि भल लागन ताल हॉर्स ट्रेडिंग लिखि परियो. ओके, IRM Goyaram लिखि परियो किछि असुविधा नहीं. एटा उटे माने एमती किछि खराब टर्म हुए तो एटा होतला तो and this has been written in some माने जोडा कोनती बहुत एक्सपीरियंस लोक से बुक रे भी इनसे लिखछन, तेणु किछि असुविधा नहीं. IRM Goyaram कल्चर सर एनसीईआरटी 12th क्लास रे मेंशन है बस. मु बहुत जगह पढ़ी छी माने एमती ऑफिशियल लेवल ले भी लिखा है जिनसोडा को हला, तेणु you can write that, no problem. So next, the concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years, highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. Two parts of the question, that you have to highlight the drawbacks in the existing structure and to the extent to which the cooperative federalism would answer the shortcomings. दीटा जिनिस तुमको लिखिया पड़ियो. So simple, any question तुम लिखुछ, just define the concept what is asked in the question. जहाँ भी concept अच्छी question है सेटा को हमको mention करेगा पड़ियो. Cooperative federalism मानने कौन? जो cooperative federalism मानने होची, it is a concept, it is a democratic concept that reflects the relationship between the center and the state, where both come together to address the common problem of the state.
with each other's cooperation. That is the basic definition of the cooperative federalism. Common तम निज लैंग्वेज लिखो हाइलाइट तुम जहाँ बुझीच से हाइलाइट कर ठीक अच्छे एमती ना कि एमती ऑफिशियल डेफिनेशन किसी लिखार अच्छे ओके दरकार नहीं तो तुम लैंग्वेज लिखो नेक्स्ट यू कम टू द क्वेश्चन द ड्रॉबैक्स ओके व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर तो ड्रॉबैक्स रे बहुत पिला मु देखुतले कि जण खाता जहाँ दीटा तीन लिखिछ बट आई एम टेलिंग यू 5 to 7 पॉइंट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ड्रॉबैक कौन ए 17 पॉइंट तुम जीएस रे भी लिखिपर एसए रे भी डेफिनेटली लिखिपर बिकज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज ए वेरी इमर्जिंग टॉपिक तुमको एसए रे पचरा हे जीएस रे पचरा हे तुम इंटरव्यू रे ही पचरा हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कौन एवरीथिंग सो first point the drawbacks of the cooperative federalism is the you can say or you can say challenge of the cooperative federalism is the over centralization okay over centralization कौन होची because कहीं over centralization होची because our constitution is quasi federal in nature so center has some overriding power to frame some rules okay quasi federal structure the center has some overriding powers to frame some rules and they are in case and it involves some discretion or can say also involves some direction to the states तो जदि आमे सेंटर को ओवरराइडिंग पावर दौचे आ सेंटर डायरेक्शन इश्यू कर स्टेट को देयर माइट बी सम एलिमेंट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन ठीक अच्छे तो गोटे स्टेट को फेवर कर गोटे स्टेट को फेवर कर तो that is one aspect. Second is regionalism. How regionalism or drawback or you can say challenges to the your cooperative federalism. So the diversity amar rochi India is a country of diversity. The diversity hochi there because of existence of different cultures and language etc. Okay, way of living. So there might be some states or areas which feel alienated. ठीक है से मैंने भावुँ कि वी आर नॉट गेटिंग एनफ अटेंशन दैट वी डिजर्व सो हेले कौन हो रीजनल फीलिंग दैट गिव्स राइज टू सिसेशनिस्ट टेंडेंसी ठीक अच्छे दिस इज द सेकेंड पॉइंट देन थर्ड पॉइंट यू कैन राइट दैट ग्रेजुअली ओवर टाइम द allocation of funds to the welfare schemes have come down. This is the third point. Fourth point you can write about interstate river water disputes. Okay. Example Mahadayi river water dispute between Goa and Karnataka and Mahanadi. You know Chhattisgarh and Odisha. Next, but taxation. Taxation में कौन लिखियो देखो हमारा after GST. Okay. हाँ GA governor will come to that point. After GST. Introduction of GST. There was 101 Constitutional Amendment Act. ओके 101st Constitutional Amendment Act से कौन होता है जीएसटी इम्प्लीमेंट है तापरे सेंटर गोटे पैकेज देला स्टेट मानव कि वी विल रिइंबर्स योर लॉस इन रेवेन्यू हाँ विल रिइंबर्स योर लॉस इन रेवेन्यू फॉर 5 years सो से कौन हो टैक्सेसन आम देखा जे से केस कौन होता सर्टन टैक्सेसन पावर ऑफ द स्टेट्स वर टेकन अवे एंड दैट वाज द एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट or confrontation between the center and the states. Okay, so this is one aspect. 101 Constitutional Amendment likhibo there certain taxation power from the states were taken away. That is one area of conflict. Then about president's rule. Okay, president rule you know. Okay, there is the power of the president to dissolve the state governments. Although this has been calmed down. This has come down after the various Supreme Court judgments, but still it is there. Okay. Then you can write the uniform approach while framing policies. Okay. So it is लिखि परिबो कि although this has also come down because of Niti Aayog. Okay. That takes into account the view, the inputs of all the states because in the governing council of Niti Aayog, all the chief ministers are the members. But some states are dissatisfied with the framing of the policies with the uniform approach. Okay. So these are issues. ये 5-17 पॉइंट तुम लिखिबो challenges हो drawbacks हो जहाँ भी हो ठीक अच्छे allocation of budget सेंटर वर्सेस स्टेट इश्यू टिके आउ थरे एक्सप्लेन करिवे अच्छा देखो allocation of budget देखो allocation of budget मु कहूँ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम
the allocation to the various welfare schemes have come down. Suppose MG नरेगा रे allocation कमी गलानी आस्ते आस्ते, ठीक अछि। तो सेटा ही गोटे इश्यू जे से वेलफेयर स्कीम रे allocation धीरे धीरे कमी जाउछि। देन इश्यू ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट इन द स्टेट कैडर्स, ओके हाई सेटा भी गोटे हे परिबो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी, द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, ओके। सो देन these are the challenges, okay। then आमे लिखिबा कि केमिति एटा एड्रेस हे परिबो इशूटा। तो चैलेंजेस ड्रॉबैक सब एथरे कवर हे गला। तो केमिति एड्रेस हे परिबो इशूटा। फर्स्ट होची डेफिनेटली यू शुड राइट इंटरेस्टेड काउंसिल, ठीक अछि। इंटरेस्टेड काउंसिल एबेल मीटिंग हेतला बोधे ईस्टर्न काउंसिल रो मीटिंग हेतला, तो presided by the home minister। So strengthening the interested council, that is also very important। kahin interested council would be a good forum, would be a proper forum to address the interested dispute। it may be border dispute, it may be river water dispute, jaha bhi dispute अछि, ठीक अछि। then in the framing of laws, okay, the states should be provided adequate space in the making of the laws, okay। then you can write that the Niti Ayog like institutions residuary powers to the state governments like in US, हाँ सेटा भी गोटे इश्यू हे परिबो, residuary power आमे दे परिबा स्टेट मानको। then the Niti Ayog should work comprehensively towards building the confidence of the states in the policy making, okay, because in the most of the policy domain Niti Ayog रो सबु policy making रे रोल रहउचे, ठीक अछि। and there should be institutions like Niti Ayog in every state, okay। काहे ना planning commission still अछि, because planning commission was not conducive for cooperative federalism, सेति पय that was abolished, okay। so Niti Ayog रो रोल एठी लेखियो। then democratic decentralization of the administration in true spirit, ठीक अछि। डेफिनेटली जेमती आशुतोष सेट दैट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन केमती हे पर हम रेसिडुअल पावर टाको डिसेंट्रलाइज कर दवा स्टेट मानो, दैट इज वन principle of democratic decentralization, okay। so these are the areas which should be explored to strengthen the federalism, okay। then cooperative federalism जदि पढ़िला कि कौन कौन को एरिया आउट एस्पेक्ट मु कहि दोछि इन व्हिच एरियाज वी आर एक्सप्लोरिंग द concept of cooperative federalism, को एरिया एक्सप्लोर करूछ हमें। फाइनेंशियल एस्पेक्ट रे हमें देखले जीएसटी काउंसिल एटा लिखिबो, पॉलिसी मेकिंग एरिया रे हमें देखले नीति आयोग, ठीक अछि। देन आउ गोटे जिंस लिखि परिबो देयर इज इंक्रीज्ड डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स by the finance commission over the years, okay। 14th finance commission one of the highest devolution, okay। then finance commission लिखि परिबो, okay। then लिखि परिबो कि the president rule आगो जेमती होउथला लागू होउथला स्टेट मान ऊपर, that has come down, okay। so ए सब जिंस लिखि परिबो। then एट लिखि परिबो कि separation of power जोटा हमरो schedule 7 रो अछि separation of power, that is constitutional protection for the cooperative federalism, okay। okay so these are the areas in which the cooperative federalism is working। so एटा लेके आमे जानले कोठी cooperative federalism अछि, कोठी प्रॉब्लम अछि, सॉल्यूशन कोन हेई पारिबो, सरला, ओके ठीक अछि। नॉन पार्टीशन गवर्नेंस एज मेंशन्ड इन द ARC, वेरी गुड, बहुत अच्छी। एटा ब्रोड इश्यू, एसे भी पढ़ी पारिबो, एसे पढ़ले भी ए जिंस मेंशन करिवो, हला ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले, एक्सप्लेन how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he exercises, okay ठीक अछि। article 148 introduction लिखि परिबो, article 148 deals with the office of the comptroller auditor general of India, CAG of auditor general of India। so and even also write the famous statement of Dr. B.R. Ambedkar that this is the most important office of the in the can say constitution of India, okay। so you all know that guardian of public purse, the friend philosopher guide of the public accounts committee, se jinso सब भी चाहिए तमे लिखि परिबो introduction if you have time, but this is the basic thing to mention that article 148
दिस इज ए मस्ट राइट ओके देन केमिति आमे क्वेश्चन पचारछि हाउ तांकर जो अच्छी vital role how this is reflected in the terms of his appointment तो आमे लिखि पारे कि the role of president in the appointment of CAG president appoints the CAG under his or her name or name and seal and the CAG can resign by writing the resignation letter to the president okay and removal ground is same as the judge of the Supreme Court this is one point then is security of tenure and he can be removed by president with procedure mentioned in the constitution ठीक है then next होची to maintain the non partisanship he is debarred or he is not eligible for further appointments after his or her retirement ठीक है is not eligible for the further appointment okay then salary जहाँ भी अच्छी consolidated fund of India रे अच्छी and out important जिनिस होची कि no minister can represent the CAG in the parliament okay that is one important issue and important area then ये सब जिनिस रहला कि how the importance of CAG has been mentioned in the you can say ensured in the constitution then powers तो तुम लिखि पारिबो कि ऑडिट से ऑडिट करंती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटीज यूनियन टेरिटरी देन योर how the CAG guide the public accounts committee okay I mean the assessment of the expenditures in the post budget phase okay then you can write about that she जो corrective तांका report टा laid down हुए before the parliament he also watches that if the corrective measures that has been suggested in the report are taken or not ठीक अछि are implemented or not so that also ensured by the CAG then public accounts committee कहली आउ next जिंस होची if requested by the state government or central government he also can audit corporations bodies state institutions etc okay so these are the roles of CAG okay range of power में कहले आउ मेथड्स ऑफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट कहले आ गोटे जिनिस लिखिबो कि CAG विषय मन रखता हो कि द CAG ऑफ इंडिया also has audited the UN headquarter multifunctional तांकर UN headquarter बहुत wing अछि एते गोडा wing अछि CAG of India has audited the UN headquarter that is one of the achievement and that signifies that the comptroller and auditor general of India is taking the you can say the standards which are being followed is according to the global best practices okay so that is that will take care of the question सर फर्स्ट पार्ट टिके आ दे तीनटा पॉइंट कहिबे कि कोटा सर फर्स्ट पार्ट जो बीआर अंबेडकर पर जो कहिले जो इंपोर्टेंस ऑफ CAG टा तांकर how the constitution ensures the independence of the office of the CAG first होची appointment and resignation रे he is appointed under the seal of the seal and name of the president and he resigns from the office by submitting resignation to the office of the president then next if at all the CAG is removed from the office the procedure to be followed is same as the judge of the Supreme Court okay then and that should be only according to the methods or the process mentioned in the constitution then he is debarred or he is not eligible for further appointment after the end of his tenure okay then fourth point is that the service condition cannot be altered to his you can say dissatisfaction or you can say the service conditions cannot be altered then the charges of the CAG are taken from the consolidated fund of India ठीक अछि then next point is that no minister can represent the CAG in the parliament ठीक अछि and the CAG को पाई कहीं पे representation दे परिबे नहीं ठीक अछि parliament रे so these are the things ensured by constitution to maintain the independence of the office of the CAG okay बाकी ड्यूटी जहाँ कहली बाकी इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 148 मेंशन करिवो आंबेडकर कोन कहले मेंशन करिवो
You can also write that the CAG has audited or has been a part of audit of the global of the UN headquarters, and it proves that the CAG of India follows the audit standards that is according to the global best practices. Okay, this will take care of the question. हाँ आउ किसी जिनस मन रखता जदि CAG रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ला ताले लिखिबो हमर थिले CAG थिले विनोद राय तो सी केतरा जिनस सजेस्ट करथिले कि CAG शुड ऑडिट द ऑल द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स PPP मॉडल जहाँ भी अच्छी गवर्नमेंट रो CAG ताको ऑडिट करिवे, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को ऑडिट करिवे, गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटी को ऑडिट करिवे, दैट ए जिनस गुडाक दैट शुड बी केप्ट विद इन द एम्बिट ऑफ द CAG. ओके एटा गोटे पॉइंट. नेक्स्ट होची CAG शुड बी अपॉइंटेड बाय ए कॉलेजियम सिस्टम जेमती आमर CVC चीफ विजिलेंस कमिशन कमिशनर जमती अपॉइंटमेंट होचंती तो CVC भी सेमती गोटे कॉलेजियम सिस्टम रे अपॉइंटमेंट हेबे, नॉट लाइक दैट अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. ओके सेटा भी गोटे सजेस्ट कराइतला. थर्ड जिन सजेस्ट कराइतला कि आमर जो CAG एक्ट अछि 1971 द CAG एक्ट 1971 शुड बी अमेंडेड टू कीप पेस विथ द चेंजिंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस. ठीक अछि 71 रे CAG एक्ट हेतला तो इटा बहुत बहुत दिन हेगलानी ऑलरेडी 30-35 इयर्स. ओके 30 यू कैन से 50 इयर्स अप्रोक्सीमेटली. सो सेटा को हमें चेंज करा दरकार कहीं ना तो ऑडिट स्टैंडर्ड चेंज होची, करप्शन मॉडल चेंज होची, तो डेफिनेटली CAG एक्ट शुड बी अमेंडेड. ओके सो ये जिनस समूह तुम लिखि पारिबो कि दीज आर द रिफॉर्म सजेस्टेड बाय मिस्टर विनोद राय द फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके CAG गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट UPSC रे 2-3 थर क्वेश्चन पढ़लानी. सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट पढ़ी पारे क्वेश्चन तो एतिक जिनस तो मन रखले आराम लिखि दे पारिबो. तो जदि आउ गोटे भी पार्ट पचारि पारे कि व्हाट आर द इश्यूज विथ द ऑफिस ऑफ द CAG सेटा गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट पचारि पारे द इश्यू कौन अछि. CAG PPP मॉडल गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटी PPP मॉडल गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटी और PRI पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है. तो तुम लिखिपर कि ऑफिस ऑफ CAG सहित कौन कौन इश्यूज एसोसिएटेड. फास्ट हूँ इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट जोटा कहली कि कॉलेजियम सिस्टम गोटे दरकार. ठीक अच्छे इट इज अपॉइंटेड ओनली बाय द एग्जीक्यूटिव. सेकेंड हूँ कि हाँ डिलेज in the action delays in taking the action on the basis of CAG reports. ठीक है सेटा गोटे इश्यू. ठीक अच्छे एंड तापर हूँ आउ गोटे इंपोर्टेंट इश्यू हूँ कि yes there has been decline in the number of institutions being audited by the CAG. okay तो सेटा गोटे इश्यू. तो ये सब जिनस हूँ फास्ट हूँ इश्यूज इन अपॉइंटमेंट किसी क्लीयर गाइडलाइन ना. नेक्स्ट एटा भी लिखिपर कि जोटा कहली कि CAG एक्ट हूँ 1971 रे हितला एपन से एक्ट अमेंड हैनी टू कीप इन पेस विथ द चेंजिंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस. सेटा गोटे लिखिपर अपॉइंटमेंट लिखिपर एटा लिखिपर कि CAG रिपोर्ट्स. ठीक अच्छे रिलेटिंग टू वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट हैव कम डाउन. ओके रिपोर्ट बहुत कमी जाइए. नेक्स्ट हूँ डिले इन टेकिंग द एक्शन सजेस्टेड बाय द CAG ये सब जिन लिखिपर. ओके ओके आउ किसी ना जस्ट ये पॉइंट मन रख खाली जमी मन पड़े जब परीक्षा पढ़ला क्वेश्चन CAG रिलेटेड क्वेश्चन ताले एटलिस्ट यू कैन राइट समथिंग. ओके नेक्स्ट व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस फॉर imposition of president rule in a state. Analyze the significance of SR Bommai judgment in this context. Imposition of president rule in the state you all can write. Okay फर्स्ट जिनस हूँ जदि गोटे स्टेट लेजिस्लेचर तांको लीडर को चूज कर पाला नहीं अनेबल टू चूज द लीडर. Then second point you can write that if there is a coalition government and it breaks down and there is confusion and there is a delay in selecting the chief minister. Then third point you can write that if one party which is claiming to form the government loses the majority on the floor of the house. Okay, next lekhi paribo if the state fulfills or you can say state fails to follow the directions given by the center. नेक्स्ट लिखिपर ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेसिनरी ये सब जिन लिखिपर. ठीक है देन लॉस ऑफ मेजोरिटी बाय द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन.
ये सब जिनस हूँ लिखिपर है। हाँ आउ गोटे जिनस लिखिपर कि इफ द इलेक्शंस आर पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, वार है, एपिडेमिक होगा, ये सब जिनस होगा। These are the grounds of imposition of president rule। ठीक अच्छे। सो एसआर बोमाई जजमेंट कौन कौन थिला एसेंस। ओके, तीन चार इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी एसआर बोमाई जजमेंट दैट क्वेश्चन पचार एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसआर बोमाई जजमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो एसआर बोमाई जजमेंट कौन कौन था लिखा पड़ो। तो लिखिपर कि फास्ट एसआर बोमाई जजमेंट एसआर बोमाई द बेंच सेड दैट the power of the president to dismiss a state government that is not absolute and that is subjected to judicial review। Okay, and the president should use this power only after the proclamation is approved by both houses of the parliament। Okay, then next जिनस हूँ जदि भी से पार्लियामेंट आप्रुव न करुच्ची से पर्यंत प्रेसिडेंट ओनली कौन करें, ओनली सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, सस्पेंड करें, डिजल्व करें ना। ठीक अच्छे, सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली until and unless it is proclamation is approved by both houses of the parliament। okay, okay, then next लिखि परिबो कि the president rule is to be used in rarest of the rare circumstances। okay, it should not be a routine affair। okay, so these are the significance of these are the elements of एसआर बोमाई जजमेंट। तार सिग्निफिकेंस कौन है कि जहाँ आगुर जो होता कि आर्बिट्रारी डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सेटा बंद होगा। ठीक अच्छे, इट पुट एन एंड टू द आर्बिट्रारी डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो ये आउ गोटे सेकेंड सिग्निफिकेंस है कि जो पार्टी मेजोरिटी अच्छी, ठीक अच्छे, एंड द मेजोरिटी शुड बी प्रूव्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सो फ्लोर ऑफ द असेंबली इज द फोरम that should test the majority of the government of the day। it should not be the recommendation of the governor or the proclamation of the president rule। ठीक अच्छे, the floor of the house is the forum where the majority of the government of the day would be tested। तो मैं देखी थी वो लास्ट जहाँ भी केस है it might be related to defection, it might be related to proclamation of the president rule, जहाँ भी है सबू केस रे सुप्रीम कोर्ट has always gone for floor of the test, the floor test। okay, सबू केस रे सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट प्रथम ऑर्डर देछंती बिकॉज ए ट्रेंड स्टार्ट है एसआर बोमाई जजमेंट रो। सबू केस रे महाराष्ट्र भी देखी फ्लोर टेस्ट आगे कर तापर कथबार्ता, उत्तराखंड भी से है। ठीक अच्छे, लास्ट 4-5 वर्ष भितर जहाँ भी ये सब जिनस ऑलवेज द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर फ्लोर टेस्ट फर्स्ट। ओके, दैट केम फ्रॉम एसआर बोमाई जजमेंट ओनली। ठीक अच्छे, सो दैट जदि आउ नेक्स्ट जिनस कि जदि भी गोटे स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कराई विथ सम मालाफाइड इंटेंशन दैट कैन बी रिसोर्टेड बैक टू ऑफिस। ठीक अच्छे, यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कि जदि गोटे मालाफाइड इंटेंशन में गोटे गवर्नमेंट को डिसमिसल कराई दैट कैन बी रिसोर्टेड बैक टू द ऑफिस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स that was established after the एसआर बोमाई judgment। okay, and it लिखि पारो कि the एसआर बोमाई judgment protects the state governments from discretionary power of the president or you can say center if there are different political dispensations in the state and center। next, while the central and state governments both derive their authority to while the central and state governments both derive their authority from the constitution, the Indian constitution provides for a federal system with a unitary bias। explain। okay, so ये तुमको लिखा पड़ो कि फेडरल फीचर कौन अच्छी, यूनिटरी फीचर कौन अच्छी। बेटर जहाँ भी तो तुम लिख ठीक अच्छे, बट टिके माने डिवाइड कर लिखले भल। सपोज मु कहबी कि हाउ द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स both are reflected in legislative matters। legislative matter रे केमती फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर हमर रिफ्लेक्ट होची। फर्स्ट होची वी हैव 3 डिफरेंट लिस्ट, 3टा डिफरेंट लिस्ट होची, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। सो दिस सिग्निफाइज द फेडरल फीचर।
ठीक अच्छे बट रेसिडुआरी लिस्ट इज विथ द सेंटर so that signifies unitary feature ठीक अच्छे ना देन सेम लेजिस्लेटिव मैटर कौन हो जदि गोटे स्टेट लॉ एंड सेंट्रल लॉ आर इन बोथ ऑन द सेम सब्जेक्ट देन द सेंट्रल लॉ वुड प्रिवेल ठीक अच्छे कि नहीं तो दैट इज वन यूनिटरी फीचर ठीक अच्छे so center has dominance over both concurrent list also and over the state list in case of any conflict between the law which is made by the state and center on the same subject okay so that is a federal feature then it is तीनटा different list लिखि परिबो and लिखि परिबो कि each has their own jurisdiction over the elements mentioned in the respective list okay समस्त निज agriculture is a state subject तेणु आगे तापर लॉ स्टेट बन पार सेंटर भी बन पार ठीक अच्छे तो सेंटर हैज ओवर राइडिंग पावर तो सेटा गोटे एस्पेक्ट लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट कौन है यू फास्ट हूँ तुम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसटा फेडरल फीचर केमती हो इट इज रिक्रुटेड बाय द सेंटर एंड दे वर्क इन द स्टेट्स ठीक अच्छे तो दैट इज वन फेडरल फीचर ठीक अच्छे सो नेक्स्ट हूँ जे स्पेसिफिक किसी सिचुएशन हेले तो गोटे सपोज गोटे सिविल सर्वेंट सहित किसी स्पेसिफिक सिचुएशन है से सेंटर चाहिए ही द सेंटर कैन ब्रॉट बैक दैट ऑफिसर टू सर्व फॉर द सेंटर एगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट जदि गोटे स्टेट गोटे ऑफिसर को छाड़िया चाहूनी ताहले भी सेंटर चाहिए भी करि परिबो से जिनस ठीक अच्छे तो दैट इज यूनिटरी फीचर देन imposition of president rule is the unitary feature okay so ये जिनस होला एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट रही गला देन फाइनेंशियल मैटर रे लिखि परिबो कि द जीएसटी लागू होईची जीएसटी और जीएसटी काउंसिल एटा होची फेडरल फीचर बिकॉज जीएसटी काउंसिल मेंबर सब स्टेट रो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा जीएसटी काउंसिल मेंबर सो जीएसटी काउंसिल इज ए फेडरल फीचर ठीक अच्छे सो देन नेक्स्ट जिनस होची कि सेंटर हैज पावर टू लेवी सम एडिशनल टैक्सेस अंडर द जीएसटी ओके सो दैट इज वन ऑफ द यूनिटरी फीचर टैक्सेशन डोमेन रे फाइनेंशियल डोमेन रे ठीक अच्छे देन आउ गोटे जिनस होची सेंटर हैज द पावर टू गिव लोन्स ग्रांट इन एड ए सब जिन सेंटर दे पार तो दैट इज यूनिटरी फीचर ठीक अच्छे ना सो लेजिस्लेटिव डोमेन रे कौन रहा एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन रे कौन रहा फाइनेंशियल डोमेन रे कौन रहा यूनिटरी फीचर कौन रहा फेडरल फीचर कौन रहा सो एमती लिखिले दिस विल बी बेटर तो प्रेसिडेंट रूल टू बी यूज्ड इफ वायोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर लाइक सेक्युलरिज्म सो बेसिक स्ट्रक्चर भी समान रहे ओके ठीक अच्छे बट देयर आर सम डेफिनाइट माने यू कैन से क्राइटेरिया when the president rule will be imposed ठीक अच्छे तो तेणु ओनली सेक्युलरिज्म हेले हो पार बट सेटा तो हो पारनी बट देयर आर सम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया यही केस रे ही प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन हो पार अदरवाइज हो पार ना ओके देन बाकी यूनिटरी फीचर फेडरल फीचर तुम सब जानिछ से जो लिस्ट अच्छी कौन ताको लिख दी पार बट मोर ऑब्जेक्टिव थिला कि तुमको कहबार सेंसिटाइज करा कि हाँ तुम एमती भी गोटे आंसर लिखि पार कि लेजिस्लेटिव डोमेन रे कौन होची लेजिस्लेटिव डोमेन रे कौन अच्छी यूनिटरी फीचर फेडरल फीचर एडमिनिस्ट्रेटिव रे कौन अच्छी फाइनेंशियल एस्पेक्ट रे कौन अच्छी आंसर टी भल हो देन एथरे लिखि पार सिटीजनशिप रे सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी फीचर ओके डिवीजन ऑफ पावर तुम डिस्कस कले बाई कैमरा लेजिस्लेटर यहाँ भी देख लिखि पार तुम बाकी गुड़ा सब जानी किसी कह दरकार नहीं ओके देन ये भी लिखि पार कि जो जिन आम डिस्कस कले कि कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये तुम लिखि पार कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर ऑल्दो दैट इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी बायस बट लिखि पार कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर नेचर केमती हो पार सेम कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्जांपल भी दब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एग्जांपल मैं जो डिस्कस कले कि starting from 10th finance commission to 14th finance commission the devolution of the finances has increased gradually point number 1 then niti aayog cooperative federalism okay then competitive federalism रे नीति आयोग जो रैंकिंग गुड़ा कर स्वच्छ भारत रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग
the states between them and states and center compete with each other. Okay, so example the cooperative federalism example kon GST council is one of the example of cooperative federalism. Then competitive federalism example the ठीक अछि. That should be the nature between the center and the states, relation, the nature of the relation between the states, center and the states. Okay, so this will take care of the question. Then what are the various issues around the ordinance making power of president and governor? Also discuss the safeguards which are in place to prevent the misuse of ordinance making power. There are two parts of the question. First, that what are the issues around the ordinance making power of the your president and governor. Second part hochi safeguard kon hochi. First hochi issues. The first issue is that the ordinance does not take the confidence of the, you can say, parliament. ठीक अछि, and which should be the forum for making the law. Okay, so you can say that by doing this, point लिख पाइबो कि bypassing the legislature, heading लिख पाइबो bypassing the legislature. By doing this, the ordinance, the spirit of the ordinance goes against the will of the people. Point number one. Point number two, that it infringes upon the separation of the power. ठीक अछि, काहे कि ना the role of your legislature is to give a broad framework of the law. तापरे ताकू detail policy making करिवो executive. This is the established convention. तो जदि executive सेटा करूची ता माने there is a issue of separation of power. ठीक अछि. Then third, that ordinance की करचंती, president करचंती. So the satisfaction of the president is very subjective. ठीक अछि, because satisfaction of the president has not been subjected to the scrutiny of the your legislature. Legislature scrutiny hella pore जाएंगे president sign करंती ना, तो president satisfy होंती. कहीं ना president जदि legislature scrutiny सरला परे भी president पाखु bill गला, president has the power to return the bill. ठीक अछि, सेतेबेले देखिबे नाही I am not satisfied, तमे आउ थरे bill टा देखो. सेतेबेले the satisfaction of the president comes into action. तो आउ थरे पठेला परे से साइन करबाक बाध्य. ठीक अछि. ओके, ता माने हम जानिले कि satisfaction of the president टा justified, काहे ना ऑलरेडी सेटा legislature पास हे कि जाईची. ए केस रे कोन होची, the satisfaction of the president is in question. काहे कि जो ordinance आछी that has not been passed by the legislature, scrutiny हेनी. That is the third point. So these are the basic issues around the ordinance making power of the president, or it may same is the case for governors also. So introduction लिखि परिबो एटा होची issues. Introduction जो लिखि परिबो 1 2 3 2 1 3. तो 1 2 3 deals with ordinance making power of your president and 2 1 3 deals with ordinance making power of the governor. ठीक अछि, एटा introduction. तापर second लिखिलो what are the issues, and next part of the question is the what are the safeguards. ठीक अछि. The next is that first is that president सेतेबेले ordinance करि परिबे जेतेबेले both of the house are not in session. Point number 1. Okay, then next, that is subjected to, that is justiciable. ठीक अछि, that is justiciable and that is subjected to judicial review. ठीक अछि. What is subjected to judicial review? The satisfaction of the president. The satisfaction of the president is subjected to judicial review. R.N. Cooper case रे कहिथिले, sorry I don't know which Cooper, but Cooper case रे माने Supreme Court कहिथिले कि the satisfaction of the president is subjected to judicial review. Okay, so then same thing was also reiterated by Supreme Court in the S.R. Bomai case. S.R. Bomai case रे same जिनस कहला कि yes, there should be relevant materials present to prove that yes, the satisfaction of the president is according to the law. सेतिकी evidence, सेतिकी material नथिले, president your Supreme Court might declare the thing as unlawful. ठीक अछि. So then next होची limitations. Third point, limitations कौन रोची ordinance making power. Ordinance making power limitation यार रोची कि president सेही subject उपरे ordinance करि परिबे जो subject उपरे parliament has the power to make laws. जहाँ चाहिए सेटा करि परिबेनी. ठीक अछि, that is the limitation.
Then next, protection of the fundamental rights. तो एमती ऑर्डिनेंस तुम करि परियो जोटा कि फंडामेंटल राइट को नहीं जो it ordinance cannot take away the fundamental rights. Okay, then there is a certain time frame or there is a time bound approval needed by the parliament. Next point लिख परियो कि parliament has to approve the ordinance, ठीक है, within a reasonable time. In the very next session in which the parliament reassembles, the ordinance has to be approved. Okay, then next जिनिस होउची कि president will promulgate the ordinance only after the aid and advice of the council of ministers, because these are involved रहिले ना council of minister भी involved रहिले, president भी रहिले. So aid and advice of the council of minister headed by prime minister is essential to promulgate the ordinance by the president. Okay, so you cannot say that it is completely discretionary. Okay, because aid and advice of the council of minister is also there. So it is लिखि परियो conclusion ने that ordinance making power is to be used as an emergency power, not always. ठीक अछि, and लिखि परियो कि the judicial review and parliamentary supremacy are the basic features of our democracy. Okay, so in the context of ordinance making power, there shouldn't be tussle between the two. Judiciary कहबो नाही तुम भूल कलो, ठीक अछि, माने एग्जीक्यूटिव को हमें ठीक कलु, ठीक अछि. तो this is you can say this is a challenge to the separation of power between executive and your judiciary. Okay, so it should be used very sparingly and as an emergency tool. Okay, so this will take care of the question. Next, what is the separation of power? How the organs of democracy, your executive, legislature and judiciary influence and balance each other. Okay, see, then article 50, separation of power, introduction, and definitely you should write that. Okay, then write one line why the separation of power is needed. Article 50 deals with the separation of power. Then why the separation of power is needed, kahingi darkar. It is darkar because there are to curb chances of corruption, maladministration, nepotism and abuse of the power. First is abuse of the power. Say जिनस टाको control करिया पे your separation of power is needed. Okay, article 50 and why this is needed. Introduction is लिखले sufficient. Okay, then also ये जिनस टाको तुम correlate करि परियो कि with the individual माने fundamental rights, fundamental right protection करिया पे दरकार, ठीक अछि. Then next जिनस होउची आमे next पचाले how the three wings of the judiciary, the three organs of democracy, executive, legislature and judiciary influence and balance each other. तो एथरा मु लिखिबा कि केमिति there is a element of collaboration between the three wings of democracy in various functions that reflects that both these influence each other and balance each other. ठीक अछि ना. So first होची legislature और executive भितर कौन relationship अछि. Okay, आमे जाने छे already कि the executive is a part of legislature, ठीक अछि, and it is responsible to the legislature, ठीक अछि, and parliament supervises the work of the executive and holds it accountable for its policies and actions. That is one aspect between coordination of executive and your legislature and checks and balance जहाँ भी रहा, ठीक अच्छे. देन जोटा मु कहली दी तीन थर कि पार्लियामेंट मेक सम लॉज, ए कोऑर्डिनेशन केमती होची, पार्लियामेंट मेक सम लॉज इन ए ब्रॉड फ्रेमवर्क. सी पार्लियामेंट रे डिटेल किछि लिखा न थाए, ठीक अछि, एई प्रोविजन्स रहइबो, एई एक्ट अछि, एई एक्ट रे एई प्रोविजन्स रहइबो, बट ता भितर डिटेल्ड कोन रहइबो, formulate detailed policy it is the duty of the executive. So that is one aspect of coordination between legislature and executive. Okay, then ଆମର जो गवर्नमेंट अच्छी, it is not the presidential form of government. So the head of a state and head of the government both are different, ठीक अच्छे. that is a balance. एंड कहीं ना आमर जदि तुम देखिपर जे अलग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे द सिंगल पर्सन इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड सिंगल पर्सन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी हैव नॉट दैट सिस्टम, ठीक है ना.
So these ये जो चारटा पॉइंट मैं तुमको कहली that reflects the your influence and balance between legislature and executive. Next time we discuss करिबा how these elements the influence and balance is there between the legislature, your executive and judiciary. देखो फर्स्ट जिनस होची जे appointments, judicial appointments are made by the executive. ठीक अछि, that is one aspect. Then second, that there are some judicial functions which are enjoyed by the presidents and governors. They are part of executive, and they also enjoy some your judicial powers like remission, respite, ठीक अछि, pardoning power. ए सब जिनस, these are judicial powers. They are also enjoyed by the your functionaries of the executive like presidents and governors. Next part लिखि परिबो कि district magistrates, they also discharge some judicial functions. तहसीलदार भी गोटे कोर्ट अच्छी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी गोटे कोर्ट अच्छी, ओके, इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ओके, दे आल्सो दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव. ठीक अच्छे, आम जो कहले टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो मैंने रही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एम होती परमानेंट एग्जीक्यूटिव. द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आल्सो एंजॉय सम जुडिशियल पावर्स. सो these are the things that defines the your influence and balance between executive and judiciary. ठीक अच्छे. So legislature executive देखिले, then executive judiciary देखिले. ठीक अच्छे. So next देखिबा कि relationship between legislature and judiciary. ठीक अच्छे. First होची जे judicial review. ठीक अच्छे. The actions of legislature, or you can say the laws passed by the legislature, can be declared null and void if it does not conform to the ideals of the constitution. ठीक अच्छे, और infringes upon any part of the constitution. तो भाई ये तो करदे ठीक अच्छे, से माने कौन करिवे, judges can be removed by the legislature. ठीक अच्छे. तो legislature चाहिए गोटे judge against रे माने removal, it can proceed with removal of one judge if there are some substance, or you can say that concrete evidences are available, then you can proceed with removal of judges. ठीक अच्छे. सो एटा भी गोटे एस्पेक्ट रोचे. ठीक अच्छे. सो एमती लिखिबा कि यस एई दीटा तीनटा विंग एमती एमती निज निज भितर चेक्स बैलेंस अच्छी, इन्फ्लुएंस भी अच्छी. देन किछि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मन रखियो कि माने सेपरेशन ऑफ पावर रो किछि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट. आर्टिकल 50 तो तुम समस्त जानिछो डीपीएसपी रे कि इट पुट्स द ओब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ओके, एंड आर्टिकल 123 हमर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रहला, प्रेसिडेंट होछन एग्जीक्यूटिव हेड, बट he discharges some legislative functions at the time of need. जब दरकार हैला ताहले भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रे पावर तांगर अछि. ठीक अछि, आर्टिकल 123. ठीक अछि. देन नेक्स्ट होची आर्टिकल 121. आर्टिकल 121 कोन इंप्लाई करछि, द कंडक्ट एंड of conduct of judges of Supreme Court and High Court cannot be discussed in the floor of the House in the Parliament. ठीक अछि. Then next होची Article 361. Article 361 says that the president and governors they are immune from the judicial proceedings. Okay, so these are the four features in the constitution you must remember. Jodi question pachraala ki what are the features, what are the provisions in the constitutions which ensures the separation of power, or you can say yes, ensures separation of power. First like Article 50, Article 123, then Article 121, then Article 361. ठीक है. These are four important articles related to your separation of power. अब बाकी कहली influence and balance तीनटा हेडिंग ने कहली, legislature executive रे कोन अछि, executive judiciary रे कोन अछि, next judiciary आउ legislature रे कोन अछि. Okay, complete. Then next question. The exercise of discretionary power by any office has the moral obligation of objectivity and impartiality. However, the powers bestowed in the office of the governor are often mired with controversy. Analyze. The question पचारछि कि you analyze the what are the issues
related to the office of the governor. ठीक अच्छे. So first issues कौन ठीक अच्छे. Introduction लिख परियो governor is a vital link between the state government and central government in the federal structure. ठीक अच्छे. Federal structure रे governor has governor, you can say, one of the connecting link between center and the states. Okay. So introduction. Then next you write that what are the issues with the office of the governor. First is the process of appointment. Process of appointment, you can say that is completely in the discretion of the central government. That is one issue. Okay. Second, under Article 200, governor can reserve a bill of the state legislature for the consideration of the president. ठीक है. So that might have some political bias. Okay. Then the report of the governor is sacrosanct, or you can say the report of the governor is the basis of imposition of the president rule in the state. ठीक है. Report of the governor and your satisfaction of the president. So that is the basis of imposition of president rule in any state. ठीक है. And then next is that governor summon, prorogue and dissolves the legislative assembly. ठीक है. सेटा गोटे aspect. Then लिखि परिबो in case of any coalition government हला कि post poll alliances हला. ठीक है. से केस रे governor has the discretion to invite any party or any fraction to form the government. ठीक है. तो से होची कोन, once you give some party or fraction the scope to form a government, naturally तार influence use करके से कोन करि परिबो, हॉर्स ट्रेडिंग प्रमोट करि परिबो. ठीक अछि. सो एटा तो एमति लिखि परिबो कि जे it has, governor has discretionary power to invite any party or fraction to form the government in case of post poll alliances, and sometimes it has been complained that promotes horse trading. Okay. So these are the issues with the office of the, you can say, governor. Okay. तो प्रोब्लेम तो होगा तापरे किछि रिकमेंडेशन तो डेफिनेटली दवा पड़ो. इंपोर्टेंट कमिटर रिकमेंडेशन कौन अच्छी रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. इट इज ए मस्ट रिमेंबर. बहुत थर माने तुमको यहाँ लिखा पड़ो एस रे भी जीएस रे भी. सो फास्ट हूँ राजमनार कमिटी रिकमेंडेशन थिला कि आर्टिकल 356 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माने आर्टिकल 356 357 राजमनार कमिटी रिकमेंडेड दैट टोटली तुम डिलीट कर दियो आर्टिकल 356 एंड 357 को डिलीट कर दियो, एंड द कंडक्ट ऑफ द गवर्नर शुड नॉट बी लाइक एन एजेंट ऑफ द सेंटर. दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ द राजमनार कमिटी. इट्स शुड नॉट बी लाइक द एजेंट ऑफ द सेंटर, rather should be like the constitutional head of the state. Okay. Second, Sarkariya Commission. Very good. Sarkariya Commission recommendation कौन था? Sarkariya Commission recommended that yes, जोटा हम कहली कि Article 356 should be used in very rare cases. ठीक है. When it is become an unavoidable circumstance for the constitutional, to restore the constitutional machinery in the state. एमती किसी अनएवोइडेबल सर्कमस्टांस है जोटी कि तुम माने तुमको रिस्टोर करिया पड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, से केस रे यू कैन यूज दैट. ठीक अछि. देन योर हाँ आउट जिन से कहते सरकारी कमिशन ये बिफोर यू यूज द आर्टिकल 356 एटलिस्ट गिव ए वार्निंग टू द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक अछि. यस यू आर डूइंग दिस एंड यू माइट फेस द योर imposition of president rule. Okay, you should give a warning to the state government. Then Justice Venkatachalaya Committee, National Commission for Review Working of the Constitution, से recommend करते कि ये 356 तमे जहाँ भी use करूँचो, that should be used as a last resort. एमती नहीं कि सकाल उठलो मुँह फोन धोइलो ब्रश कलो तापर 356 लगे दला. It should be used as a last resort. ठीक अछि. So तापर conclusion रे गवर्नर ऑफिस को भलो कहबो काहे ना क्रिटिसिजम भलो ना काहे गवर्नर को बहुत बड़ा रोल अछि. You write that the office of the governor has a vital role in cooperative federalism because it is a, जब इंट्रोडक्शन कहली, it is very, you can say
it is very essential. The office is essential for proper working of the constitutional democracy, and there should be some element of impartiality impartiality in the functioning of the governor, or you can say that the appointment process should be transparent. ଯେମିତି ଆମର recommendation ଥିଲା କି the interstate council must be consulted before appointing the governor. ठीक है जी. The concerned state chief minister should be consulted before appointing the governor. ठीक है जी. You can write those things. ठीक है जी. So this will take care of the question. And next, the efficiency of the collegium system has been challenged time to time in terms of its independence and transparency of judicial appointments critically examined. Collegium system is in news. बहुत थोड़ा माने एबे चली डिबेट ऑलरेडी. सो इंट्रोडक्शन लिखिबो कि collegium system came in, it was not in the constitution originally. It came into existence after the third judge's case. Okay, and it deals with तीन टाइम्स appointment, elevation and transfer. Appointment, elevation and transfer of judges of Supreme Court and High Court. ठीक है जी. इंट्रोडक्शन सरला. The next issues, critical exam पचास है ना, we have to go for positives and negatives. Okay, second judge's case, I think third judge's case. Okay, so we'll see the positives of the collegium system. कौन positive of the collegium system होची, first जिनिस होची कि it minimizes the you can say interference of the executive in the appointment of the judges. Okay, it minimizes the interference of the executive in the appointment of judges. सेटा फास्ट जिनिस वाला. Then next that second जिनिस होची collegium system रे अछंती कि हमरो चीफ जस्टिस अछंती आ 4 senior most judges. Okay, तो apolitical people appointment এই सजेशन दी हबो कि माने कोटा अच्छा गवर्नर. ओके, गवर्नर you can write yes, non-political people can be appointed. Okay, straight लिखि पारो कि असुविधा नहीं. Okay, third judge's case expanded the collegium to give a member body. That's fine. Okay, second judge's case. So next हम लिखि पारिबे कि जेहेतु the senior judges are in the supreme in the collegium, some chief justice of India, other 4 senior most judges, as they have wide experience in the legal field, so their appointments should be keeping their appointments is presumed to be of highest judicial standards. जहाँ को सेमान चूज करिवे सेमान तो डेफिनेटली से स्टैंडर्ड रहिथिबा ना. सो द एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस सेटा गोटे एस्पेक्ट. ठीक अछि. तो नेक्स्ट जिंस होउची कि क्वालिटी से हेला सेथरे कोन हेला क्वालिटी इज मेंटेन्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक अछि. सो कॉम्पिटेंट पीपल आसेले क्वालिटी भी मेंटेन होला. ओके, सो give wide experience to the judiciary. These are the advantages of the your collegium system. Okay, then what are the criticisms? Criticism first likhibo the practice which is followed in the collegium system is nowhere followed that the judges are being appointed by a body consisting of only judges. ठीक अछि. That is point number 1. Point number 2 लिखि परिबो कि there is a presumption. ठीक है, there is a presumption that it promotes a nepotism and you can say personal favoritism. ठीक है, तो एमती लिखिबोनी कि ता कहार माने मामू कार भणजा एसु अछंती गोटे एमती लिखिबोनी कि it is complained that the collegium system you can say favors nepotism and personal favoritism. Then second you can third you can write that the process itself is not transparent. Kahinki na opaque process. The proceedings of the collegium system are not displayed to the public, or you can say are not available to the public. If at all some proceedings are shared, they are very short proceedings. बहुत short proceedings share करा जाए. Detailed proceedings are not shared. Okay. Next, fourth point. There is no established criteria on which the collegium system chooses the judges. को क्राइटेरिया हिसाब रे कॉलेजियम सिस्टम जज मानू चूज करूची से तार किछि भी एस्टैब्लिश क्राइटेरिया नाही. ठीक अछि. सो दैट प्रमोट्स वाइड स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस. ओके,
सो नेक्स्ट जिनस लिखिपर कि जोड़ा कहली कि किसी एस्टाब्लिश क्राइटेरिया नहीं कि एमती लिखिपर कि देयर इज नो रिटन मैनुअल किसी मैनुअल नहीं जो बेसिस रे सिलेक्शन हम ठीक अच्छे देन बेले बेले कह जाए कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक ठीक अच्छे एंड आउ गोटे भी एग्जांपल अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्रिटिसाइज्ड दैट द कॉल इट इज लाइक एन एम्पायर विदिन एन एम्पायर ओके सो ए सब जिन तो ठीक अच्छे लिखिब आउ गोटे जिन लिखिपर कि it had the collegium recommendation of the ebe last law minister बोधे last 10 to 15 days back वो बड़ा statement और देते given the Supreme Court told that government is sitting on the recommendations of the Supreme Court in appointment of judges the Supreme Court the law minister कहले कि you are itself you are sending us the recommendations are coming to the government in a time frame of months and years ठीक अच्छे तो तमे बहुत मास वर्ष विलंब करके आमको दौच फाइल ठीक अच्छे योर रिकमेंडेशंस आर कमिंग लेट ओके सो से तुम लिखिपर कि द डिलेड रिकमेंडेशंस ऑफ द कॉलेजियम टू द गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग वैकेंसीज इन द जुडिशियरी ठीक अच्छे एटा लिखिपर कहीं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस द लॉ मिनिस्टर टोल्ड दैट यस it is the collegium system which is responsible for vacancies in the judiciary because they are sending file to the government even they are taking months and years to send the file okay so these are the things you can write I would a very important thing you can write that in a democracy everything should be directed towards welfare of the people so the institution which has representation of the people will best serve the purpose of bringing welfare to the people but collegium system re there is no representation from any section of the society except the judges ठीक अच्छे किसी ना एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन ना लेजिस्लेचर ना सिविल सोसाइटी ना कहार भी नहीं ठीक अच्छे सो the representation the no representation of any section of the society except the judiciary itself raises a question on the credibility of the collegium system ठीक है जी so these are the things criticisms the conclusion लिखि परिबो it is the time to make the system of appointment of judges more representative by taking into confidence or taking into board the representation from legislature, executive, civil society, so that it should be more, it could be made more transparent. You can say accountable, and you can say pro people. Okay, so like this you can conclude the answer. Okay, so this will take care of the question. So discussion is over, and एग्जाम तो केबे हबो अपन तो नोटिस आसीनी बेटर यू शुड कीप इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू अपियर एग्जाम इन फेब्रुअरी एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट ओके भाभी बसनी कि मार्च एग्जाम हम ट्रैक रिकॉर्ड द जजेस कैन नॉट बी ओनली क्राइटेरिया मेंस एग्जाम फेब्रुअरी हम यदि मार्च रे नोटिफिकेशन आसुची ठीक अच्छे जे हाँ मार्च रे हम बोली ताहले ठीक अच्छे इट इज गुड बट राइट नाउ you should prepare keeping in mind the February